What do you think, how effective has the role of the UNSC or the United Nations Security Council has been in pivoting and leading to a resolution of the Kashmir dispute? UN Charter के तहत सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ उस वक्त एक्ट कर सकती है जब ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं एक रेजोल्यूशन पर इत्तेफाक करें. What fetters and hindrances do you think Pakistan is presented with at the moment to take this dispute up to the International Criminal Court or the International Court of Justice, for instance? 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो क्लियर वायलेशन है सिमला एग्रीमेंट के. उसको प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन होती है वो कंपल्सरी नहीं होती, वो वॉलंटरी होती है कि जब तक दोनों साइड्स पाकिस्तान और इंडिया कंसेंट नहीं देंगी इन वन फॉर्म और द अदर, तब तक ये मामला ICJ में नहीं जा सकता. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया शुभ ख्वाजा और आज हम आपको दावत देते हैं हमारे प्रोग्राम ट्रेल ब्लेज़र में. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट है आजकल के ग्लोबल सर्कमस्टांसेस से. आज हम बात करेंगे ऑन द कश्मीर इशू एंड ऑन द अफ़गानिस्तान इशू इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जो इंटरनेशनल लॉ की इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और उनका क्या रोल रहा है आज तक और अभी कितना क्रूशल है इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने या उसकी रेजोल्यूशन ढूंढने में. तो आज हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर अली सुल्तान. Mr. Ali Sultan is a law teacher at LUMS and he is a teacher of international law at the Foreign Services Academy. He also regularly advises public stakeholders on international law matters. Most notably, he has advised the government of Pakistan on the Marshall Islands case that was taken up before the International Court of Justice. Mr. Sultan has remained the executive director of the Research Society for International Law for over 5 years. Mr. Sultan has graduated in economics and political science from Middlebury College before becoming a graduate Juris Doctor from the University of Virginia Law School. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Thank you for having me. Thank you so much for joining us today, sir. Pleasure. Sir, I would like to first off begin our interview with the fact that they have this very, you could say, idealistic image about the entire international legal regime. Firstly, do you think it's a very correct approach to have about it, given how and what the United Nations generally is and how it functions? So if you could just allude about the functionality of the United Nations for a bit. जी, अब इसमें different schools of thought हैं. एक जो dominant school of thought है जिस lens के through बैनुल अक़वामी अमूर को analyze किया जाता है उसको realism कहते हैं. Which basically means that क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक सिंगल ओवर आर्चिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये एक एनार्किक सिस्टम है इनहेरेंटली, और स्टेट्स जो हैं एट द एंड ऑफ द डे दे बेसिकली हैव टू लुक आउट फॉर देयर इंटरेस्ट्स ऑन देयर ओन. अब इन ऑपोजिशन टू दिस स्कूल ऑफ थॉट देयर इज़ the liberalism or the institutionalist school of thought, which says that international arena के अंदर इतनी भी anarchy नहीं है, and there are global institutions which cumulatively form this global governance framework that we have in the world. And the most important organization when it comes to global governance is, as you mentioned, the United Nations, which of course was created in the aftermath of the Second World War. दुनिया ने उस वक्त की जो मेजर पावर्स थी उन्होंने एक तरह से सबक सीखा जो एक इतनी कैटास्ट्रॉफिक और टोटलिटेरियन वॉरफेयर, टोटल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड स्केल जो वर्ल्ड वॉर 2 में देखा गया. इससे पहले भी लीग ऑफ नेशंस भी थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई, लेकिन वो डिसबैंड हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान. तो इसलिए उस वक्त रूजवेल्ट, चर्चिल, Stalin, they held a series of talks, and then eventually UN का जो charter है, फिर बहुत सारे जो उस वक्त के जो free world थी, because you have to remember Pakistan didn't exist at the time. Definitely, yes. Most of the world was still colonized. जी.
اینڈ دا UN کا ایک جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ UN نے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے, پولیٹیکل سیلف ڈٹرمنیشن, اس کے اندر بہت سکسیس ہوئی ہے UN سسٹم کی. سو ڈی کالونائزیشن کا جو عمل ہے اس میں دیٹ marks a great success for the whole United Nations system. So anyway, coming back to the history, جب تھوڑی سی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ World War II کے بعد وہ ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے تھے جس سے وہ انشور کر سکیں کہ اب اتنی کوئی گلوبل لیول پر وارفیئر نہ ہو. اب اس کے لیے پھر UN چارٹر نے بہت ایکسپلسٹلی یوز آف فورس جس کو کہتے ہیں بائی ون اسٹیٹ اگینسٹ another state, اس کو پروہیبٹ کیا ہے except in very narrow circumstances of self-defense. Self-defense, yes. And also importantly, UN کے system میں this notion of collective security, which basically means کہ a threat to any one state is basically a threat to all the UN members, and the UN is collectively going to act. کیسے؟ انہوں نے پھر various organs بنائے UN system میں, جیسے کہ جنرل اسمبلی ہے, سیکریٹریٹ ہے which is headed by the Secretary General, پھر ٹرسٹیشپ کاؤنسل تھی جو ڈی کالونائزیشن کے اندر انوالو تھی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو کہ لیگل آرگن ہے پورے UN سسٹم کا, اور پھر جو مین جو ٹاسک جس کو دی گئی فار مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکورٹی ان دا ورلڈ, وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا آرگن بنایا گیا. اور اس میں پھر ممبرشپ جو ہے وہ 5 ممبرز جو تھے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں, جی the 5 permanent members, جس میں US ہے, چائنا ہے, UK ہے, فرانس ہے اور رشیا ہے. سو اب بات یہ ہے کہ UN چارٹر کے تحت سیکورٹی کاؤنسل صرف اس وقت ایکٹ کر سکتی ہے جب یہ 5 permanent members جو ہیں ایک ریزولوشن پر اتفاق کریں. اور اگر وہ ویٹو, ان کے پاس رائٹ آف ویٹو ہے, ہر پرماننٹ ممبر کے پاس رائٹ آف ویٹو ہے, تو اس کی وجہ سے جو توقعات تھیں وابستہ تھیں یونائٹڈ نیشن سسٹم سے, اس کی جس وقت اس کو کریٹ کیا گیا تھا 45 میں 46 میں, وہ پوری نہیں ہو سکیں. اور سیکورٹی کاؤنسل جو ہے بہت سارے میجر دنیا میں کانفلکٹس اور کرائسیز کے اندر کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکا, جیسے کہ بالکن کی وارز تھیں, پھر ابھی سیریا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ یہ ویٹو جو ہے یہ ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کر لیتا ہے آن موسٹ ایشوز. جی بالکل. تو اس لیے میں کہوں گا کہ UN کے اندر آئیڈیلزم, جو آپ کا کویسچن جو تھا انیشلی, آئیڈیلزم ہے, لیکن آئیڈیلزم کی ہمیں ضرورت بھی ہے. اگر آئیڈیلزم اور ہوپ نہیں ہوگی تو پھر ہیومینٹی جو ہے وہ کس طرح سے ایک بہتری کی طرف گامزن ہوئے گی. سو اس لیے آئی تھنک ایون اگر تھوڑا سا آئیڈیلزم ہے بھی, انٹرنیشنل لاء میں بھی آئیڈیلزم اگر ہے بھی, دیٹ از گڈ, وی نیڈ دیٹ آئیڈیلزم. Right. So, as you said that the United Nations Security Council has at times played a very effective role in international conflicts, and at times it has fallen short on its promises. So, now the Kashmir issue, something I guess which is very close to heart of every Pakistani, and I think as a human being it should be close to heart to every person that is aware and should be aware of the plight of Kashmiris at the moment. So, what do you think, how effective has the role of the UNSC or the United Nations Security Council has been in pivoting and leading to a resolution of the Kashmir dispute? جی, اس میں بھی آپ کو تھوڑا سی تاریخ میں جانا پڑے گا. دیکھیں, سیکورٹی کاؤنسل, اب کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بہت کم ایسے ایشوز ہیں جس میں سیکورٹی کاؤنسل ایکچولی پوری طرح سے انوالو ہوئی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شروع کے دن تھے سیکورٹی کاؤنسل کے 48, جب کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا بائی دا وے لے کے گیا سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے, کیونکہ انڈیا کا خیال تھا کہ اس کی مطلب کی ریزولوشن پاس ہو جائے گی اور وہ یہ جلدی سے جو ہے ایشو جو ہے ریزالو ہو جائے گا. They already had a treaty of, according to them, they had the treaty of accession to rely on. جی, لیکن جو ایکسیشن ہے وہ تو پھر جب سیکورٹی کاؤنسل نے اپنی ریزولوشنز پاس کی, اس کے بعد
ایکسیشن تو پھر نلیفائی ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے ریکگنائز کیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. جی, پاکستان بھی اس کی پارٹی ہے اور انڈیا بھی اس کی پارٹی ہے, دونوں ایکول پارٹیز ہیں. اور اگر انہوں نے یہ پیسفل سیٹلمنٹ, کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے پیسفل سیٹلمنٹ کرانی ہے ڈسپیوٹس کی, کیونکہ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جو رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کریٹ کیا گیا ہے اس میں اب یوز آف فورس کی اسپیس نہیں ہے اسٹیٹس کے پاس. سو ملٹری سولوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر ملٹری سولوشن یوز کیا جائے گا یا کیا جاتا تو وہ یو این چارٹر کی نفی ہوتا, ایگریشن ہوتا, وہ انٹرنیشنل لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. جی بالکل. تو اب جو سیکیورٹی کاؤنسل نے بیسکلی جب پھر معاملے کو جانچا, اس پہ غور کیا, تو انہوں نے پھر سیریز آف ریزولوشنز پاس کی. لائک 18 کے قریب ریزولوشنز ہیں, ایک ریزولوشن نہیں ہے. اور یہ پوری ریزولوشنز کا آپ نے کیومولیٹیولی ریڈ کرنا ہوتا ہے اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک اس کا پڑھ لیتے ہیں پیراگراف اور پھر اسی کے اوپر ہم پوری اپنی پوزیشن جو ہے وہ بیس کر لیتے ہیں, وہ غلط ہے. سو اینی وے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریزولوشنز نے پھر یہ تسلیم اب کر لیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور اس کی فائنل ڈسپوزیشن جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک یو این سپروائزڈ, یو این ایڈمنسٹرڈ پلیبسائٹ یا رائے شماری جو ہے جس میں کشمیریوں کو یہ چوائس دی جائے گی کہ کیا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن اب انڈیا کو میرا خیال ہے ہمیشہ سے اس بات کا پتہ تھا کہ, اور یہ بات پارٹیشن سے پہلے جو اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم تھے لارڈ ایٹلی, انہوں نے کہا تھا 2 مہینے پہلے پارٹیشن سے پہلے, انہوں نے فیمسلی کہا تھا کہ کشمیر نیچرلی belongs to Pakistan. It's in the scheme of nature that Kashmir should be Pakistan's. Yes, I mean we had a Muslim majority. All of that, right? مطلب وہ ہم نے سارا پڑھا ہوا ہے. Demographics and geography, demography, religion, cultural ties, all of that, right? اور وہ پھر بڑے repressed تھے. مہاراجہ ہری سنگھ who was a Hindu ruler. So he was deeply unpopular. اس کی وجہ سے بھی ایک سینٹیمنٹ جو تھا وہ پاکستان کی طرف کی فیور میں تھا, اوورwhelmingly فیور میں تھا. تو اس لیے جو بھارت ہے اور جو اس کے پہلے وزیر اعظم جو تھے جواہر لال نہرو, وہ خود بھی کشمیری پنڈت فیملی کو بلانگ کرتے تھے. جی بالکل. تو اگر آپ ان کی اب رائٹنگس پڑھیں تو وہ انہوں نے بیشتر دفعہ لکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں بڑا سینٹیمنٹل ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو باقی بھی بہت ساری 540 اسٹیٹس تھیں جو جس کو انڈیا نے اپنے اندر ضم کیا. جوناگڑھ از اے ویری گڈ ایگزامپل آئی تھنک آف دیٹ. یس, بٹ وہ والا بھائی پٹیل دیکھ رہا تھا اس کو. یہ جو کشمیر کا معاملہ تھا یہ نہرو نے ہمیشہ سے اپنے پاس پرائم منسٹر آفس میں رکھا. بیکاز اٹ واز سو کلوز ٹو ہم, بیکاز آف ہز نیچرل لیننگس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال تو امپورٹنٹ اس میں نقطہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جب پھر آ گئی ہیں, اس کے بعد سے انڈیا بڑا سرپرائز ہوا کہ تو سیکیورٹی کاؤنسل نے ایکسیشن کو نلیفائی کر دیا اور انہوں نے اس کو مان لیا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو پھر ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ رہی ہے اس وقت سے آج تک کہ انہوں نے آہستہ آہستہ کشمیر پہ اپنا جو قبضہ ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کو لیگلائز کروانے کی کوشش. کنسالیڈیٹ اور لیگلائز تو خیر وہ انٹرنیشنل لا کے انڈر تو نہیں کرا سکتے, تب تک نہیں کرا سکتے جب تک وہ پلیبسائڈ نہیں ہوگا. ہاں جی, لیکن ڈومیسٹکلی آئی مین پوسٹ 5 اگست, ہاں, لیکن اس کی انٹرنیشنل لا میں حیثیت کوئی نہیں ہے. سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, نمبر 91 ہے اور نمبر 122 ہیں, جو کلیئرلی کہتی ہیں کہ جو لوکل ڈومیسٹک آپ کے جو اقدامات ہیں, چینجز ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا آن دی انٹرنیشنل
dispute between India and Pakistan. I think this is a very crucial point to note, as you said, that whatever India is doing domestically, and it has been reiterated time and again by our own government and by various representations of the United Nations, that it has no legal efficacy and validity in the international legal regime. Absolutely, absolutely. But then again, the next question that I was just going to move to was the politicization of the United Nations, in particular the UNSC, because वहाँ पे जो 5 permanent members हैं, they're very strong powers, they're superpowers of the world, and they have their own political stakes. The resolution of the Syrian dispute is also because of some political affiliations that the member states have. Kashmir का भी एक थोड़ा सा issue है. Palestine again is one example that we can quote. तो वो जो politicization हो गई हुई है within the UNSC, and it's a very radicalized politicization that we can now see. It's very apparent. India has just been recently appointed as a 1-month non-member president of the United Nations Security Council. So do you think that such an appointment is just and fair given their own record up till now? Well, ideally no. It reeks of hypocrisy because देखें, वही जो मैं बात आपसे पहले कर रहा था, फिर इंडिया ने स्ट्रैटेजी, जब उनको ये सेटबैक मिला रेजोल्यूशंस की फॉर्म में, देन दे चेंज देयर स्ट्रैटेजी, एंड देन देयर स्ट्रैटेजी वाज के हमने बेसिकली इसके ऊपर अपना जो कब्ज़ा है इसको कंसोलिडेट करना है, और हमने जो रेजोल्यूशंस हैं उसको किसी तरह से नलिफाई करना है या डीलेजिटिमाइज करना है. और सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए 50s में. उन्होंने बड़े कमीशंस बनाए, डिक्सन कमीशन बनाया, मैकनॉटन कमीशन बनाया, फिर फ्रैंक ग्राहम की कंसिलिएशन एफर्ट्स थे, फिर इवन प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर भी एक पॉइंट पे बाय अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ पॉल निमिट्स, ही वाज अपॉइंटेड. लेकिन इंडिया ने इन सारे एफर्ट्स को हर मोड़ पे उन्होंने अपोज किया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये कश्मीर जो है ये तो इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का और ये हमारा इंटरनल मैटर है. लेकिन दिस पोजीशन ऑफ कोर्स हैज़ नो वैलिडिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ. So they can keep on saying whatever they want to say, but insofar as international law is concerned, it is of no validity. हमारी concern इस वक्त ये है कि leaving aside the legal parameters, when you look at the situation on the ground, वहाँ पर वो ये demographic changes जो कर रहे हैं after revocation of Article 370 and 35A जो आपने mention किया था, फिर वो कल्चरल और उसका जो सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर है उसको चेंज कर रहे हैं. नॉन लोकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम कैन नाउ ओन लैंड देयर. उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई है which basically can acquire any land in the state with impunity. फिर उसके साथ साथ वो जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसीज की, ताकि मुस्लिम मेजॉरिटीज़ जो हैं वो फर्दर डाइल्यूट हो जाएं. जी बिल्कुल. तो ये सारे इक़दामात हैं जो ऑन द ग्राउंड हो रहे हैं, लीविंग असाइड द लॉ एंड आवर पोजीशन व्हिच इज़ सिक्योर एज फार एज द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर कंसर्न. बट वही जो आपने पहले जिससे शुरू किया है कि एक तो आइडियलिज्म है, दूसरा यू हैव टू लुक एट द रियलिटी और फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. Yes, absolutely. So these facts on the ground right now are of immense concern to us. I mean, they're screaming out the fact that India is a huge human rights violator and it is using aggression and force. And all of that. So वो इस तनाजुर में जब आपने जो सवाल किया था, जब आप उसको देखें कि क्या इंडिया डिज़र्व करता है कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कोई नॉन परमानेंट सीट की कोई इतनी अहमियत नहीं है. और भी लाइक केनिया भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, नाइजीरिया भी है, नाइजर. सो अगर आप देखें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए. पाकिस्तान भी रह चुका हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर मल्टीपल टाइम्स. At the moment, especially in terms of their own internal situation when it comes to minorities, वहाँ पे minorities के internally भी बहुत बुरे हालात हैं, Muslims in particular. Absolutely. So, not just Muslims, their own minorities are being repressed. The Sikh community, the Christian community, just anybody who's not a Hindu, essentially, in general. So, I personally feel, as a student of international law or somebody who's just a bit interested in the political and the real politics side of it,
India does not really deserve to be elected. जी, बट यू हैव टू ऑल्सो बी माइंडफुल, और ये वही जो आपने जो बात पोलिटिसाइजेशन की भी की थी कि इंडिया इज़ ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए फॉर मेनी ईयर्स. इट्स रियली ऑन टॉप ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, विच इज़ के देखिए एक तरह से इंडिया इज़ अ स्टेटस कॉन्शियस, स्टेटस सीकिंग power right now. It is looking to become members of global institutions such as Security Council, फिर इसी तरह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वगैरह है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जी जी बिल्कुल. तो जो वो चाह रहे हैं इस एक महीने की जो उनको प्रेसिडेंसी जो कि रोटेट करती है अमंग ऑल द मेंबर्स, और इस महीने में वो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग विच शुड कंसर्न अस राइट नाउ. सो एक तो वो अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर इस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली नहीं प्रेजेंट करेंगे, बट वो इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे शायद कि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके उसके थ्रू. तो हमारी ये कंसर्न होनी चाहिए कि जो भी डिस्कशन यूएन में अफ़गानिस्तान पे होती है, जैसे कल भी एक डिस्कशन हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो सेशन इंडिया ने कॉल किया है, राइट. सो objective truth should be presented before the other members rather than distorted truth, distorted facts, right. So एक तो ये है, और दूसरा जो वो करेगा वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक सेशन बुलाना चाह रहे हैं. उसमें वो कोशिश करेंगे कि दोबारा वो रेकअप किया जाए. हालांकि आपने, अगर आप फॉलो करती होंगी न्यूज़, आपको पता ही होगा कि अब तो बहुत सारे शवाहिद भी हैं पाकिस्तान के पास. पाकिस्तान ने डोसियर भी प्रिपेयर किया है, अब शेयर भी किया है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, और भी फ्यूचर में भी किया जाएगा, कि जिसमें आपको इंडियन फुटप्रिंट्स मिलते हैं, क्लियर फुटप्रिंट्स मिलते हैं of sponsoring terrorism in Pakistan. They're doing it through Afghanistan and elsewhere, but primarily Afghanistan. तो अगेन वो फिर उसकी हिपोक्रेसी और वो आप कह लें कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, that will all come to the fore, because how can a state which itself is a sponsor of terrorism, how can it then act as if it is the guardian of the UN Charter, of peace and security in the world. Exactly. I mean, the UN Charter clearly prohibits use of force, as you mentioned, and this is a form of indirect use of force. So, and another agenda जो India has for this month is कि वो maritime security के ऊपर बात करना चाहते हैं. ये significant है because हम जिस नेबरहुड में हम रह रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त बहुत जियो पोलिटिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो हो रही हैं. अलाइंसेस नए बन रहे हैं, पुराने अलाइंसेस आर नॉट रियली nobody is so sure about where the geopolitics is headed. But one thing which is happening is कि US और China की जो rivalry है, that has become the most important geopolitical issue of our age. Right? And उस rivalry के अंदर अब इंडिया और US जो हैं वो एक deepening partnership के अंदर involved हैं, comprehensive partnership है. लेकिन at the same time अब US expect करता है इंडिया को कि इंडिया will play its part in pushing back against China's rise. So यहाँ पर इंडिया is in a tough situation, tough position. अभी पहली दफ़ा इंडिया ने अपना नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर भेजा है for naval exercises. So it remains to be seen to what extent India is willing and also to what extent India will actually go to fulfill what the US is asking it to do. So ye bhi ek, in the future, this relationship can also come under strain, under a bit of a strain as well. So ये भी लेकिन उन्होंने इस दफ़ा अपने एजेंडा में just to please US and adopt a more anti-China posture, they'll also be holding a session on maritime security. So ये हैं जो एक महीने में हम expect कर सकते हैं. जी. Pakistan as a state has always had Kashmir
I mean, ever since I guess our genesis, as one of its very pivotal issues, and various governments have taken this issue to various organizations and platforms. But now, again, 5th August 2019 was just a very, I guess, historical date. And the events that ensued, they are very historical and very integral in the development of this issue as a global issue. Because the general perception that people had about Kashmir was that it was primarily, yes, again, a dispute of an international nature, but between just India and Pakistan. But the global impact of Kashmir is now being increasingly recognized, and Pakistan has had a very important role to play in that. Our Foreign Office is very, I guess, proactive now in terms of the Kashmir conflict. What fetters and hindrances do you think Pakistan is presented with at the moment to take this dispute up to the International Criminal Court or the International Court of Justice, for instance? Right. Before I address ICJ and ICC, let me also say कि जो 5th August 2019 में इंडिया ने जो steps लिए हैं वो क्लियर वायलेशन है सिमला एग्रीमेंट के. जी बिल्कुल. और इंडिया की सिंस द सिमला एग्रीमेंट ये पोजीशन रही है कि कश्मीर इशू आफ्टर सिमला एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर एन इंटरनेशनल इशू एंड इट इज़ अ बायलैटरल इशू. इट्स अ बायलैटरल इशू. बट 5th अगस्त के बाद जो यूएन सेक्रेटरी जनरल और अदर यूएन ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें क्लियरली अब वो दोबारा से रिकग्नाइज कर रहे हैं कि it's not just a bilateral issue as India would want it to be, but it's an international issue. So एक तरह से 5th अगस्त ने कश्मीर को, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, इंटरनेशनलाइज कर दिया है. और सिमला एग्रीमेंट जो है क्योंकि इंडिया ने खुद वायलेट किया है 5th अगस्त को, so now it cannot rely on it to advance its position of bilateralism. Anyway, दूसरी बात जो है आपने कहा इंटरनेशनल कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं हम ये मामला लेके जाते. देखें, ICJ के अंदर जुरिस्डिक्शनल हर्डल्स हैं कुछ, जब तक कंसेंट दोनों स्टेट्स प्रोवाइड नहीं करती टू टेक द मैटर बिफोर द ICJ, तब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करता. अब इंटरनेशनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन लोकल कोर्ट्स से जब आप कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट होती है. जी जी. लोकल कोर्ट्स जो होती हैं उनकी जुरिस्डिक्शन जो होती है वो कंपल्सरी होती है. It's coercive in nature. And it's compulsory, right? It doesn't depend on the consent of the two litigants. Yes. Going to the court. It court. won't depend on your consent or my consent if you're called to court. Okay. जी. But in international law, because sovereignty एक बहुत overriding value है international relations का, international system का, उसको प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो कंपल्सरी नहीं होती जी. वो वॉलंटरी होती है जी. जिसका मतलब ये है कि जब तक दोनों साइड्स पाकिस्तान और इंडिया कंसेंट नहीं देंगी इन वन फॉर्म और द अदर, तब तक ये मामला ICJ में नहीं जा सकता. सो इसलिए गवर्नमेंट में आई नो हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन एक्सटेंसिवली, लेकिन कोई जुरिस्डिक्शनल एवेन्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्योंकि इंडिया ने इस तरह के क्वालिफायर्स लगाए हुए हैं अपनी जो एक उसने जिसको डेक्लेरेशन कहते हैं जो सबमिट की हुई है उसने ICJ को. लेकिन जो आपके व्यूअर्स अगर और जानना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों ये मुमकिन नहीं है, तो प्लीज़ आप आर्टिकल 36 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट जो है उसको आप पढ़ लें. सो आपको ज़ाहिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से वो जुरिस्डिक्शनल हर्डल्स हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते. सो इसमें एक टेक्निकल हिंड्रेंस है. ये नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर कमिटमेंट नहीं है या गवर्नमेंट आइडली अगर लेके जा सके तो लेके नहीं जाएगी. नहीं कमिटमेंट तो है and they've said कि we want to take it and there's a technical hindrance because of which देखिए इससे पहले भी हमने ट्राई किया था. एक बहुत आप कह लें हमने एक एडवेंचरस अप्रोच अडॉप्ट की थी इन दिस केस द एटलांटिक केस जो कारगिल के बाद इंडिया ने हमारे एक नेवल aircraft को they shot it down. Yes. So we took the matter to the ICJ. Right. लेकिन again the case was dismissed कि jurisdiction नहीं है. तो उस वक्त फिर उससे भी एक हमने सबक सीखा कि jurisdiction जो ICJ की है वो बहुत मुश्किल है मीट करनी. जी बिल्कुल. इंडिया और पाकिस्तान के केस में. अब आपके व्यूअर्स शायद ये सोच रहे होंगे कि फिर कुलभूषण का केस कैसे चला गया. वो तो इंडिया नहीं, लेकिन वो फिर हमारी तो ना मर्जी, वो इसलिए चला गया क्योंकि एक ट्रीटी है
वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिल रिलेशंस, जी बिल्कुल, उस ट्रीटी में एक आर्टिकल है या एक क्लॉज है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुरिस्डिक्शन देता है इन केस ट्रीटी की एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिस्प्यूट अराइज करे बिटवीन स्टेट पार्टी. इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन दैट इज यस. सो कश्मीर के केस में कोई हमारे पास ट्रीटी नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ट्रीटी नहीं है, नहीं है. सो देयर इज नो ट्रीटी इन फोर्स जिसमें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसमें इस तरह का सिमिलर क्लॉज हो जैसे कि कुलभूषण के केस में वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिल रिलेशंस में था. तो इसलिए कुलभूषण का केस आईसीजे में इंडिया जो है वो ले जा सकता था. एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड टू इट. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज देखें अब इंटरनेशनल लॉ में ये भी हुआ है कि स्टेट्स जो है आईसीजे के सामने अपेयर नहीं होती, आईसीजे की जजमेंट्स को पूरी तरह से मानती नहीं, लेकिन वो स्टेट्स जो हैं वो रोग एक्टर्स हैं जी. जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं जिनको अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है, और बिकॉज उनकी आप कह लें उनके जो प्रोपेगेंडा है उन्होंने वो कैंपेन बहुत इफेक्टिवली वेज की है पाकिस्तान, बहुत अरसे से कर रहे हैं, किताबें लिखवाई हैं, थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे huge chunk of the national budget dedicated just to propaganda. They are completely committed to it. फिर EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट भी आपके सामने है. Controversial scandal. तो बस सारी चीज़ों की वजह से हमारी रेपुटेशन पहले ही थोड़ी सी इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए जी. तो अब हमारे लिए especially it's as important as ever कि हम जो हैं हम इंटरनेशनल लॉ की पूरी तरह से पासदारी करें. जो हमारे ऊपर डिसीजंस अगर हमारे हक में नहीं भी आती तो फिर भी हमें उनकी पासदारी करनी चाहिए क्योंकि हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल सिस्टम में इसके साथ जुड़ी हुई है. Thank you so much, sir, for your time. Thank you for our viewers for watching us. Take care and Allah.